Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, culture, and today is its 7th lecture. So let's quickly look at the student learning outcomes. By the end of today's lecture, all the students will be able to define the term nation and nationality. So my dear students, let's quickly move towards an activity, but before that, let's quickly look at the skills that will be developed. Recognition, understanding and analysis. So my dear students, let's quickly start the activity. So my dear students, in which country we live? Pakistan, of course, very good. That means we are Pakistani. ठीक है, अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम कौन है? हम पाकिस्तानी हैं. So what comes in your mind when you see this? Flag of Pakistan, and it is our identity. So now it's time for the activity. Take out your notebooks and draw the flag of Pakistan and color it. Pakistan का flag draw करें और फिर उसको color भी करें. Quickly do that. Pause the video and draw the flag. I hope everybody has made the flag. Now quickly tell me what are the meanings of the symbols in Pakistan flag and what are the meanings of the colors in this flag. White represents non-Muslim minorities, green represents Muslim majority, and the moon and the star are the symbols of progression. यानी कि ये तरक्की की जो है ये निशान है दोनों जो हैं. So my dear students, let's quickly now refresh your knowledge. What is the name of your country? Pakistan. In which country did you born? Pakistan. To which nation do you belong? Pakistan. एक ही आंसर सब questions का. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. The Messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, a nation will not be sanctified if the weak cannot take their rights without surmounting obstacles. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी वो उम्मत पाक और मुकद्दस ना होगी जिसमें कमजोर बगैर परेशान हुए अपना हक ना ले सकें. So my dear students, let's quickly move forward towards page number 27. Quickly open it in your books. I hope everybody has opened page number 27. Let's start the reading. Put your fingers where I will read. Nation. Nation का मतलब है कौम. A large community of people united by a common language, history, culture, living in a particular country or territory is known as a nation. ऐसे लोगों की कम्युनिटी, बल्कि ये काफ़ी बड़ी कम्युनिटी होती है जो कि एक खित्ते में रहते हैं और वहाँ पे जो है उनकी एक कॉमन लैंग्वेज होती है, जस्ट लाइक आर्स इज उर्दू. इसके अलावा जो उनका कल्चर होता है, जैसे हम सब शलवार कमीज पहनते हैं, ये हमारा नेशनल ड्रेस है. सो दिस मेक्स देम अ नेशन. ये उनको एक कौम बना देता है. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द नेशनैलिटी. द स्टेटस ऑफ अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ नेशन और हिज प्लेस ऑफ बर्थ इज कॉल्ड नेशनैलिटी. Nationality is obtained through inheritance from parents. We were born in Pakistan, so we are Pakistani nationals. So my dear students, यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि नेशनैलिटी क्या होती है, आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, आप जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ आप पले बड़े होते हैं, आपको वहाँ की नेशनैलिटी शहरियत जो है वो खुद ब खुद मिल जाती है. इसके अलावा नेशनैलिटी जो है वो पेरेंट्स से भी इनहेरिट होती है कि अगर आपके पेरेंट्स जो है पाकिस्तान के नेशनल हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास भी पाकिस्तान की नेशनैलिटी आ जाएगी. और अगर आप पैदा हुए हैं पाकिस्तान में तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ पाकिस्तानी नेशनल. सो दिस इज कॉल्ड नेशनैलिटी कि आपके पास जिस मुल्क की, जिस खित्ते की शहरियत है, वहां पैदा होने की वजह से या अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करने की वजह से, दैट इज कॉल्ड योर नेशनैलिटी. So my dear students, the wrap up of the lesson is the nation is a large community of people united by a common language, history or culture. Nationality is the status of a person belonging to a nation.
So my dear students, now is time for the practice. आपको अपनी स्क्रीन पे दो वर्कशीट के पोर्शंस नजर आ रहे हैं. On the one side, cut and paste the flags into their relevant boxes. अब आपको एक साइड पे डिफरेंट फ्लैग्स नजर आ रहे हैं और एक साइड पे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं विद द नेम ऑफ द कंट्री. आपको रेलेवेंट बॉक्स में रेलेवेंट कंट्री नेम के साथ उसका फ्लैग जो है वो कट करके पेस्ट करना है. So for this, you can simply download this worksheet from the description box below, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, pause the video and complete this worksheet. I hope everybody has finished the worksheet, submitted to your teacher, and we will move forward. So my dear students, in the next lecture, we will study the reasons for the pride in being Pakistani and patriotism. हम क्यों पाकिस्तान होने पे फख्र महसूस करते हैं, हम इस बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.